So, hi everyone. We are back again with our friend Nila Verma and me Ajay Joshi. So, last time debate हुआ था हमारा on Sanskrit, Sanskrit's age and Sanskrit's evolution or devolution, जिस हिसाब से उसमें motion and against में arguments हुए थे. तो that उसका उसका भी एक पार्ट अभी बाकी है, वो हम कंटिन्यू करेंगे. विल टेक दैट लेटर. बट आज का हमारा टॉपिक रहेगा celestial timelines, especially the age of Brahma and as given in the Hindu scriptures. So for the motion will be the scientific accuracy of these celestial timelines. So Nila Verma will be contesting on the scientific accuracy, and I will try to counter counter them. Okay, so since Nilab is for the motion, so now we'll start with Nilab. And thank you so much, Nilab, for joining us again. And yep, over to you. Let's start. Thanks, Ajay. Thanks for inviting me again. So today's session would be very straightforward, amazing but straightforward, right? So whenever we are talking about a timeline, celestial timeline, you might have heard a word called mythology, right? We generally name it as mythology. I never do that. I always say history. Last session also I said it's history, not a mythology. Generally, most of the time, people say that whatever written in the mythology is just imaginary. It's not correct, right? Um, so it's just not like that. Most of the things which is written over there in our Quran or the scriptures, even Mahabharata, Ramayana. I'm not saying 100% of the things because there are some sort of modification over the years. But yes, those knowledge which is intact since the ancient time, most of the things are correct. Scientifically, I'm saying. Okay. So one is our belief that okay, I believe that this should happen or this happened. So you can't do anything with the belief, right? So if I believe something, it's my belief, right? But there are a few things, especially this topic today. So what we are going to discuss today is that information which we have, yeah, debate. I mean, for me, it's basically a discussion. I generally. Yep. So the information we have in terms of the timelines of maybe planets, you can say the timeline of the age of Earth or the age of Sun or whatever age of our solar system, right? And how that is exactly written in our Puran, especially if you go and read Vishnu Puran and Brahma Puran. So these two Puran have discussed specifically about the age of Brahma, right? So how that was written in what context and how it is related to what scientists proven maybe few hundred years ago, right? So we will just discuss about that. So before I proceed, I'll just stop, and if you want to um, say anything, then we can proceed. Yeah, thank you, Nilab. Thank you for that detailed introduction over the topic. हाँ, तो point यहाँ पर ये रहेगा कि celestial timelines या astronomical जो data आपने कहा, तो whatever is available in scriptures, ठीक है, तो मैं उसको scientifically accurate नहीं मानूंगा, ठीक है. On that basis, I will be countering all your arguments. So I just want to, request you to start with the a point by point argument कि or claim, maybe you will be claiming that. तो उसका उसका मतलब जो claim है वो, and then उसकी scientific backing जो मतलब whatever you will you want to back it up with, ठीक है, वो आप दे दीजिए. तो फिर हम देखते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि मैं उसको मतलब कि if at all that is like acceptable, और नहीं होगा तो फिर मैं उसको रिब्यूट करूंगा. ठीक है. Sure. थैंक यू. Sure. So it will be mixed, right? In the English both. हाँ हाँ. Okay. Right. So जैसा मैंने कहा, it's written in Vishnu Puran and Brahma Puran. If you go and see. उसके रेफरेंसेस दे Before, देना, मतलब वर्सेस अगर आपको याद है तो दैट वुड बी बेटर. yeah, अदरवाइज that verses are there, and it's clearly written. It's not nothing. I mean, because the entire, I would say, the celestial timeline
and that Jyotish पूरा का पूरा जो Jyotish system है वो पूरा that is based on that celestial timeline. So if we counter that timeline, that we are countering the Jyotish Shastra also, astrology also. Right. That we will be doing. I will be doing that. Maybe another topic in detail, but maybe. जितना भी होगा आज जितना से करेंगे. So let me tell you the context first, and then I'll just prove it. How it is written. The only thing is you have to understand, you have to decode what is written over there. Okay. And you would be needing a calculator. So I request you just open a calculator in a separate window or this window itself, or because we have to calculate many things. Now, again, I'm not going to go into much details, otherwise the session will be very long. So I'll just go in short. Now, in our scriptures, especially Puran, I'm saying, whatever written in Puran, I will say the synopsis of those Purans are written in Mahabharata also, so that you can find in Mahabharata also, mostly. Okay. So in Puran, it's written that we are actually living in a Yuga system. Hindu Dharma is actually based on the Yuga system. You know that. Right now we are living in Kali Yuga. So there are 4 Yugas, right? We have Satyug, Treta, Dwapar, and Kali Yuga, 4 Yugas. Now in Puran, you will find a detailed, information about the timelines. That if these are the 4 Yugas, then these are the timelines. Okay. And all the timelines, basically, at the end, that will go to something related to Lord Brahmaji. Right? So I'll start with a statement which is written clearly. Okay. That one day of Brahma, like we all are having one day, right? So it's written that everyone has a particular day, 24 hours, which we generally say. So it's not hours in Hindu Dharma, it's called a prahar. So it says that, okay, 8 prahar, 8 prahar ka ek din hota hai. Right. So there's a statement that one day of Brahma in one day. And basically not one day, basically the half day, I would say, the AM and PM, you can say. So it's called a kalp. There's a word called kalp. We will discuss about that. Kalp. So it's written that when one kalp completes, right, then the entire creature, this Earth, Sun, Moon, Saturn, Jupiter, this entire solar system, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड, right? Universe. ये खत्म होता है, it get destroyed, right? उसके बाद अहोरात्र करके एक वर्ड है हमारा, अहोरात्र आता है, जिसमें ब्रह्मा does the tapasya. Okay. And that repeat that is a cycle, right? So after tapasya, again Brahma gets that power to create, and he again creates everything. Okay. Again, there's a sequence. I'm not going to go into that sequence. So this is a simple statement, right? So in that, if you find that logic, according to that logic, the half day of Brahma, that kalp, the aim, first half. If they say, okay, when it completes and everything got destroyed, that should be equal to what we have the age of Earth or age of Sun or this age of this solar system, right? We also know that in our solar system, Sun is nothing but universe. A star, right? You mean the universe? Yeah. So generally, say universe is a very broad thing. Even in Hindu Dharma also, it's a concept of universe. Like we today discussed that there may be not maybe. I mean, we know that there must be life somewhere else in some other galaxy and all. So these concepts are already there. You might have heard about that Teen Lok or Chaudah Bhuvan. So these are nothing but actually these things that will derive from those details. That is also matching, very much matching. So we are not here to discuss those things. So the simple thing is, if this says that, okay, kalp ke baad sara kuch khatam hota hai, then that timeline, the kalp timeline which is mentioned in Puran, should match the current timeline of
our solar system, planets or sun, or this kind of thing, right? If that will match, we can understand, okay. And when we got that age of planet, I think 50, 60 years ago, Ah, not before, scientifically, I'm saying. recently, Recently, 50, 60, I mean, so scientific know, okay, scientists know, I don't know the method simply. So now we have a detail, okay, the age of Earth is this much. What it means is after that much time, Earth, like other planet, will automatically, it will destroy. Or sun, like other stars, it will destroy. Right? So I'm just going to tell you a detail, a very beautiful calculation, and it's a very simple calculation. So the only request is just be attentive because it is little confusing. So if you don't know Mhm. what, if you are hearing for the first time, you may get I can confused. I can open that You can calculator open if the you want. calculator. You can Okay. open a notepad also if you want to note down something, right? Okay. Okay. I hope you guys can see. Yeah, You yeah, can yeah. see the calculator, right? So let me first describe the concept of these yugas, 4 yugas, Mm-hmm. and I'll go from a normal yuga till Kalp, right? Okay. So like we generally, there are two types of calculation. One is called a Chandra Ganana, another Mm-hmm. is Surya Ganana, Okay. right? Lunar calculation and solar calculation. Okay. Okay. Now what we use is always a solar calculation. हम लोग हमेशा सूर्य गणना को use करते हैं. So Okay. according to the solar calculation, there are 365 days in a year. It's very simple, Correct. right? Okay. But हमारा जो पुराण में whatever description we have, that is based on the lunar calculation, चंद्र अच्छा. गणना के हिसाब से. Hmm. So definitely यहाँ पे हम जो भी calculation करेंगे, that will be done according to the lunar calculation. और चंद्र गणना के हिसाब से there are 360 days in a year. Okay. Okay. So we have 360 days. Okay. Right, sir? Okay. So I'll say a human year, 360 human days is equal to one human year, One. Yeah. हाँ. right? ठीक है. But there are other creatures also. So most prominent, if I say there are two most prominent, apart from humans in Hmm. Puran, there are two most prominent creatures. One is Devas, one is Datyas, right? And we all know that the life of Deva is maybe Indra or the we call them Aditya. There are 12 Adityas, right? So that is much, much, much more than our life span. Okay. Okay. So it is said that one year, Hmm. one human year, which is a 360 days, is basically is equal to one human or 1 day of Devas. Okay. That means when we complete our 360 years, so after completion of 360 human years, देवता का कितना होता है? They only completes 1 year. Okay. So 360 human years equal to 1 year of Devta. 1 year. So हमारा जो 100 साल है, 100 years of human means 36,000 human years for devas. Okay. Right? तो whiteboard में कर सकते हैं. And exactly same timeline is for Daitya also. So you know devas and Daityas both are brothers. Okay. So Okay. devas are the elder brothers, Daityas are the younger brothers. Now they also have Daitya also having very long lifespan. So they are having the exact same timeline. So like 360 days or 360 years for devas, then similarly 360 years for Daityas. The only difference is when there's a AM for devas, that will be PM for Daityas and vice versa. So it's exactly opposite. अच्छा. Okay. 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 So this is just for understanding. So I will just exclude Datyas from here. So we'll just simply talk about Devas because that is exactly with Datyas. The only thing is the AM PM problem.
nothing else. There is no other difference, right? Okay. So from here we start our calculation. So we say that 360 years, human years, is equal to 1 year of Devas. Devas or Okay. Datyas. And be very careful. I mean, I told you, I mean, if you will not, if you're hearing for the first time, you will get confused very easily. Now that 360 years, human years, which is 1 year of Devas, this is called a Divya Varsh, divine years. Okay. So whenever I'm saying in this conversation or debate, whenever I'm saying it's a human year or divine year. Okay. Manava Varsh, yeah, Divya Varsh. So whenever I'm saying divine years or Divya Varsh, you understand Ek Divya Varsh is equal to 360 human years. That is for the foundation. Okay. Now, the Kal Chakra, जिसको हम लोग कहते हैं, the timeline, celestial timeline, this is divided into 4 different yugas. Okay, starting with Satyug, then comes Treta, then comes Dwapar, then comes Kaliyug. And then again, this cycle repeats. Again, Satyug, Treta, Dwapar, and Kaliyug. Okay. Have you seen this multiverse concept in Marvel movie or maybe DC movies? Right. Huh? Yeah. So you are going to know the multiverse concept here, in which is written in our Quran. Okay, this is very similar. So the timeline of Satyug is said to be of 4,800 Divya years. Now write it down somewhere. 4,800 Divya years. Okay. Divya years, right? And 1 Divya years you have already noted down as 360 years, human years, right? Okay. I'm opening the whiteboard. If you can share the screen, you can. Yeah. Can you see the whiteboard? I can see that. हाँ, तो अभी सबसे पहले no worries. So that's okay. That's okay. 1 human years. 360 human years. 360 days. And forget about days for now. Forget about days for now. 360 human years is equal to 1 divine years. Okay. 360 मानव वर्ष जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 दिव्य वर्ष के. राइट. करेक्ट. मतलब 360 साल जब यहाँ पृथ्वी पर बीतेगा तो स्वर्गलोक में 1 साल बीतेगा. ओके. अच्छा. नाउ इसमें से जो मैंने कहा 4 युग होते हैं, राइट? तो सतयुग इज the lifespan or time span of Satyug is 4,800 divine years. Okay. If you want, you can open a Jamboard also. That will work the same. Okay. 360 human years. उसके बाद डिवाइन ईयर के बाद क्या था? जो सतयुग का जो टाइम लाइन है, टाइम स्पैन है, दैट इज 4,800 डिवाइन ईयर्स. अच्छा. And remember, it's a divine years, not a human year. So from now on, whatever I'm talking about a divine year. We will calculate later. Don't worry. Okay. You just simply mention the divine year or a human year. That's it. 4,800 divine years, na? Divine years, right? 4,800 divine years Satyug. Satyug. And this is divided into 4 charan, right? तो कहते हैं सतयुग में कितने चरण है? 4 चरण है, right? ठीक है. However, this is not part of the topic, but it is interesting, so I'm sharing. अभी एक चरण कहलाता है 1200 years, 1200 divine years का. So it is 4,800 divine years means 4 चरण हो गया, right? अब जिस युग में जितने चरण होते हैं, right?
you will see, you know the Vishnu avatar, right? Dashavatar. हाँ. Okay. So according to the yuga, जिस युग में जितने चरण होते हैं, जो विष्णु अवतार होते हैं उतने ही होते हैं. अच्छा. Okay. Okay. So सतयुग में मैंने बताया how many चरणs? 4. 1200 Four. each. Total complete is 4800 divine years. और आप सतयुग में आप देखोगे तो there are 4 avatar. The Okay. first is Matsya, Pur, Mm-hmm. then Varah and Nrsimha. Nursing. Okay. These are 4 avatars which happened in Satyug. Sati. Okay. ठीक है. 4 charan, 4 avatar, right? Now, ठीक है. after that, once the Satyug is done, then comes Treta Yuga. ठीक है. So it has 3 charan. Mm-hmm. 1 charan is 1200 divine years, means 3 charan is 3600 divine years. So like Satyug was 4800 divine years, Treta का जो पूरा timeline है, time span है, that is 3600 divine years. Right? You can write it down. And ठीक है. यहाँ पे 3 चरण है, so you will see there will be 3 avatar of Vishnu. अच्छा. So in Treta, the first avatar is the 5th one, Vaman avatar. Mm-hmm. Then the next avatar will be Parshuram. Mm-hmm. And the next avatar, the 3rd one in Treta will be Ram. Shri Ram. Shri Ram. Right? तो सतयुग में 4 चरण था, 4 अवतार हो गए. त्रेता में 3 चरण है, 3 अवतार हो गए. द्वापर में there are 2 चरण, 1200 अच्छा. divine years each. So the total time span of Dwapar becomes 2400 divine years. Right? हाँ, इसमें 2 चरण हो गए. ठीक है. तो 2 चरण हो गया. तो यहाँ पे we have only 2 avatars in Dwapar, and that will be shocking for most of us or most of the people who is watching this. पहला अवतार है बलराम. Okay. Okay? And दूसरा अवतार है श्री कृष्ण. अच्छा, दोनों ही अवतार हैं. दोनों अवतार है. अभी 99% of people believe or think that Balaram is avatar of Sheshnag, which is completely wrong. Okay. I think you can close this whiteboard. That's okay. You can finally calculate, no problem. ठीक है. Or close it or maybe minimize it. I mean, that's okay. So 99% लोगों को ऐसा लगता है या बताया गया है कि बलराम जो है वो शेषनाग के अवतार है. बट हाँ. अगर आप पुराण पढ़ेंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे या और भी पुराण पढ़ेंगे, इवन महाभारत में भी जो मेंशन है, वो मेंशन है बलराम इज द 8th incarnation of भगवान विष्णु. अच्छा. ओके. ठीक है. ओके. बुद्ध जो आए, बुद्ध इज फैब्रिकेटेड. So बुद्ध, imposing बुद्ध as avatar of विष्णु was completely fabricated. Right? Yeah. Correct. क्योंकि अगर Correct. आप So here we गौतम बुद्ध, we उसका have एक lost अलग one टॉपिक है. topic of debate. हाँ. नहीं, डिबेट So का टॉपिक नहीं रह गया वो. we will discuss it. एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे. हाँ. ओके. Actually, it's also a very interesting thing because see, बुद्ध का अगर timeline माने in short, that is in Kaliyug only, right? कलयुग को स्टार्ट हुए, it's more than 600 BC. 5,000 years. Okay. And उसका 560 something before Christ, गौतम बुद्ध का. 600 So 600 BC. हाँ, so almost. So that will be again it's in Kaliyug, right? So Okay. here comes Kaliyug. Kaliyug में celestial timeline का सिर्फ एक चरण रहता है. So the total time span of Kaliyug is 1200 divine years. Okay. ठीक है, ये भी मैं क्विकली नोट कर लेता हूँ. I think you can close it. It's not बस going मैं ये anywhere. नोट कर लेता हूँ, उसके बाद 1200 divine years. And इसमें सिंस एक ही चरण है, इसीलिए कलयुग में एक ही अवतार होता है भगवान विष्णु का, दैट इज कल्कि, जो होगा, अभी हुआ नहीं है. ओके. ओके. तो कल के अवतार आपको सबको पता है. तो दशावतार में हमारे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम एंड कृष्ण एंड कल्कि. ठीक है, जिसमें से कल्कि इज येट टू हैपन, अभी हुआ नहीं है.
तो हुआ नहीं है मतलब हम लोग अभी फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक समय में जी रहे हैं, because it says अच्छा, when Kalki will come, that time will be, means there's no dharma. I mean, it's terrible. So thank God ओके, we are living in a good timeline. पीसफुल टाइम, So ठीक है। total जो ये चार युग हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, इन चारों को यदि आप मिला दो हम्म, कंबाइंड, हम्म, इट्स कॉल्ड महायुग या चतुर्युग. चतुर्युग इज अ वेरी फेमस वर्ड, ठीक है। राइट? एंड द टोटल टाइमलाइन कितना हो गया? 4800 प्लस 3600 प्लस 2400 प्लस 1200 इज इक्वल टू 12,000 डिवाइन ईयर्स. ओके, राइट सर? ठीक है, हाँ। ओके. सो दे आर चार, फोर युगस, फोर युग का तो ये पूरा टाइम वन स्पैन मेरे टेन पास है. 10,800 हुआ ना? 10,800 नहीं हुआ? No, no, 12,000 होगा. 4,800 4800, 3600, 4,800, 4,800, हाँ 4,800, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, 3600, 2,400, 2,400, ठीक 2400 and 1200. है, हाँ 12,000, ठीक है। So 12,000 divine years. Again, this डिवाइन keep in ईयर्स, mind, divine years. We are talking about in divine years now. And one divine year, we know 360 human year. We will calculate 360, later. ठीक So we know that. So अभी चार युग हो गए, सतयुग, है। त्रेता, द्वापर, कलयुग. हम्म, सतयुग 4800 divine years, त्रेता 3600 divine years, द्वापर 2400 divine years, and कलयुग 1200 divine years. Totally. अभी when that चतुर्युग completes, right? फिर ये cycle, it will repeat itself. Again, Satyug will come and like that. Right, ओके, sir? ठीक है। Now, after 71 Mahayug or Chaturyug, Chaturyug I'm saying combined. So after, when this 12,000 divine year cycle completes by 71 times, ठीक है, it calls a Manvantar. मनवंतर, ठीक है। And every Manvantar is ruled by Manu. ओके, People know about Manu, but they don't know that there are 14 different Manu. Okay. The first one was Swambhu Manu. Okay, and the right now we are living in a timeline of Vaivasvat Manu. He is the तो seventh 14 Manu. 14 Manus are till now, or they No, totally total, also it total will be in 14? one kalp. One kalp, Okay, okay. huh. Okay. So means half day of Brahma, you will say. Generally, people say 1 day of Brahma, but I'm saying half day because it's a Aprahan and Purvan, AM and PM. Okay. Okay. Many Mm-hmm. texts you will find that one kalp is 1 day of Brahma. That is also technically fine. Mm-hmm. So right now we are living in seventh Manu's timeline, whose name is Vaivasvat. Mm-hmm. Okay. Anyhow, so 71 Mahayug we are talking about. And when that cycle completes for 1,000 times, Okay. means 1,000 Mahayug, अच्छा, ठीक है। right, sir? Mm-hmm. It is said that half day of Brahma, it's called Kalp, कल, right? ठीक है। And in half day of Brahma or in one Kalp, there are 14 Manus. It's called a 14 different Manvantar. Like अभी जो हमारा वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, there are different Manvantar. Right? Mm-hmm. Okay. Every Manvantar, there will be different Manu. The king of every Manvantar will be different. And the Okay. Saptarshis also, you might have heard about that. Saptarshi, right? हाँ, सप्तऋषि, हाँ। So in every Manvantar, there will be 7 different Sikhs as Saptarshi. So that is Saptarshi is nothing but a post. अच्छा, So those at that particular timeline, those rishis which proved themselves like a amazing or great Sikhs, they will hold that position. Seven of the best or the greatest Sikhs will call as Saptarshi. Anyhow, so we come to know that after 1,000 Mahayug, there will be one Kalp, right? And after
after one kalp, the entire creatures, this Brahmand is together, Prithvi, Surya, Chandra, everything will be destroyed. But it will not destroy immediately. There's a process. So Okay. you know that who is the destroyer? We all know. So Brahma is the creator. Until now, we are living. So someone is actually feeding us. So the preserver is Vishnu, and the destroyer is Shiva. That is a simple concept. Everyone knows that, right? So it says one kalp happened, then Brahma requests Shiva that okay, now this timeline completes. Now you can go for the destruction. Okay. Then there are different in different texts there will be a little bit different details. Few says that Shiva destroys everything by his third eye, by opening his third eye, and everything got turned into ashes and all. Some says okay, he does the tandav, Rudra tandav, and then उनको जो तांडव से जो the vibration will happen, it will destroy everything. So you will find different details. But one thing is certain that after one kalp, Shiva destroys everything. Right? And completely destroyed, and then Brahma recreates it. So this cycle always repeats itself, continues. So till this point, I'll just hold till this point. Do you have any confusion? I think it's clear till now. Because Yeah, after this, we are going to go for the calculation. Okay? Cool. So I would like to calculate you. I said 1000 Mahayug is equal to one kalp, right? And in one Mahayug, there are 12,000 divine years. Divine years. So it will be 12,000 into 1,000. 12 million, yani 1.2 crores. 12 millions. 1.2. 12 million. Right, sir? Oh. And how many years I said in a divine year is 360. 360. Can you calculate it with 360? 1 second. Million into 360. 4 lakh 32. 4 arab. 4 arab, sorry, 4 arab. 432 crore. So 4.32 billion years. 4.2 right? billion. Roughly 4.2 billion years, right? Now I want 4.32 billion years. So means as per human calculation, what we calculate, after 4.32 billion years, things should destroy. Okay. Right? Now what I want you to do is you just close this whiteboard and open a browser. Okay. I can see your screen, so you just need to close it and open a browser. 1 second. Where is the browser? I still can see the whiteboard. Yeah. Okay, so I'm in the browser. Simply go to Google and simply search the age of Earth. This is I'm talking about a scientific age, which scientist says, right? Calculated, yeah. Okay. 4.5 billion years. Is it very near? Similarly, age of Sun. This is the age. I mean, close to the age of 4.32 billion years is the age of I will tell you one that also. One kalp, right? One kalp, right? That is approximately same, right? See, when we are talking about billions of years, then it's little bit negligible, right? Now go and search age of Sun. It will be around the same. 4.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, maybe. It is 4.6 or something. Right? Okay, you can search it, no problem. Can you go with any other planet that will be nearby? Solar system. To that solar system is. You can talk. I don't know if it should not give the 4.6. console. But so
even though if it is little bit differ. Mm-hmm. But can you imagine if I'm talking about Puran? I said that it is written in, say, Vishnu Puran. Now, who Mm-hmm. wrote Puran? Maharshi Vedavyas. Vedavyas Okay. happened at the era of Mahabharata. Okay. Okay. It is said that Mahabharata is 5,000 years ago, more than 5,000 years ago. I personally believe it is around 7,000 years. I mean, if you calculate the timeline of Ved and Puran, it comes 777. You know, the timeline will actually increase or decrease by 7,000 years. But okay, that's okay. 5,000 years also, if I say, Mm-hmm. means 5,000 years ago, our ancestor or the saints or whoever were there, they were able to understand the scientific timeline of this planet, the equation of that birth and death. Okay. It's amazing, right? Now, Right. I will say it will be even more closer. Mm-hmm. Why? At the start of this session, I said there are two types of calculation. One is a Mm-hmm. solar calculation, And one one is lunar. lunar. We Right. always calculate in lunar. Oh, sorry, solar. Solar. Scientists And here scientists the calculate in solar. calculate is solar always. Scriptures Okay. have the lunar Scripture calculation. have lunar means all the calculation you have to increase 5 more days for each and every step. Okay. This is 5 days, right? So it will it Gap will it will come 365. almost close to It that will come almost be very near. I'm not going to say exact. I said no one knows that. Even scientists is giving a tentative date, right? They also estimate. don't Right. know that exactly after 4.6 billion year it will be destroyed. Mm-hmm. So again, understand when we are talking about billions, so you're talking about billion of dollars, then you don't need to worry about this $100 or $200 difference. That's the same case. So if we calculate the same thing instead of 360, instead of 365, the calculation will reach even more near. Hmm. Right. Okay. And this Yep. is really amazing that it is written 5,000, 6,000 years ago. That Mm-hmm. whatever date calculation or after carbon dating or billions of dollars we spend, and then NASA comes to, okay, this should be the age of. And we are still not sure. I'm saying scientists have given a tentative date. They are still not sure. Right. Who knows it is maybe exact. I'm not claiming that, but maybe we never know. No one can be so certain that after 4.5, and now with 4.5 billion year, we are talking about this is such a huge timeline that we can have some sort of tolerance. We should have that. Right. ठीक है तो अब मैं काउंटर करता हूँ इसको ठीक है Yeah. so this is good information ये information like this was needed कि scriptures में exactly कैसे presented है तो ये लोगों को नहीं पता होता राइट सो इट्स गुड दैट यू एक्सप्लेन्ड अस एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इतना डिटेल में और इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु व्यू दिस विल अंडरस्टैंड इट राइट एट वन गो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दैट यू सेड दैट दिस इज वन कल्प 4.32 बिलियन ईयर्स राइट तो वन कल्प के बाद में तो डिस्ट्रॉय होगा एंड दोबारा रिक्रिएट होगा राइट आई डोंट नो इफ दी पीएम वाला जो कल्प आएगा उसमें तपस्या करते हैं ब्रह्मा एंड देन वो अगले कल्प में जो एम वाला कल्प है उसी में Exactly, रिक्रिएट exactly. होता है You are going to a right direction. Exactly. Yes. हाँ तो ठीक है तो वैसे होता है लेकिन डिस्ट्रॉय तो हो जाएगा इस कल्प के बाद में बट दिस एज दैट वी आर सीइंग हियर 4.6 बिलियन ईयर्स ऑफ सोलर सिस्टम या 4.54 बिलियन ईयर्स ऑफ अर्थ जो साइंटिफिक एस्टिमेशन है दैट इज द एज टिल नाउ और यहाँ साइंटिस्ट ये एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं कि दिस विल बी डिस्ट्रॉयड और अभी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है राइट No, no, दे आर no. नॉट Okay. गेटिंग Okay. डिस्ट्रॉयड द नेक्स्ट सेकंड I ठीक tell है you. इस I पे tell इस you. पे मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आप इस Hmm. पे करना Okay. ठीक है सेकेंडली एक तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है ठीक है दूसरा अगर आप 5,000 ईयर्स बोलो या आप 10,000 ईयर्स भी बोलो या फिर आप 1 लाख ईयर्स भी बोलो इन द कैलकुलेशन ऑफ इन द मतलब कैलकुलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स ये डिफरेंस ही नहीं क्रिएट करेगा राइट सो आप कह लो कि 5,000 ईयर्स पहले या मैं आज लिख दूं इसको ठीक है ना तो दिस डज नॉट I mean, the age of the actually written down or composition of Vedas या scriptures जो भी ये पुराण है जिनमें ये astronomical मतलब ये celestial timelines दिया हुआ है
इसका एज एग्जैक्टली इससे मतलब कि मतलब डिपेंडेंट नहीं है उसमें, राइट? वी कैन नॉट एक्यूरेटली सी कि ठीक है 5,000 साल पहले ही था, हम एस्टिमेट कर सकते हैं, वी कैन एस्टिमेट ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, बट और वो एक अलग डिबेट का टॉपिक है Okay, कि भाई I उसकी tell एज you कितना होना चाहिए, one ठीक है? small piece of information. Okay, हम्म I think that will you will understand what I'm saying. हम्म हम्म, Okay, now first of all, the celestial timeline. I've just explained one thing, the simple हाँ how the age of Brahma is calculated. Now, celestial timeline in a whole is so complex. You will be amazed. That ओके multiverse theory comes here, right? हम्म Now, that's why why I have actually kept that Dashavatar concept here. That was needed. I knew that you might have that question, right? ओके Now, so there's one more information which not everyone knows. So everyone think हम्म that अभी तो कलयुग चल रहा है. हम्म, इससे कलयुग से पहले means 5,000 6,000 years से पहले द्वापर was going on. हाँ Okay, उससे पहले ठीक है त्रेता होगा, उससे पहले हमारा सतयुग होगा, ठीक है राइट? तो सतयुग में हमारे 4 अवतार आएंगे, त्रेता में 3 आएंगे, द्वापर में 2 आएंगे, एंड कलयुग में भी आने वाला है. अब इसके हम्म बाद व्हेन सतयुग अगेन स्टार्ट्स, देन अगेन 4 अवतार होंगे, ठीक है राइट? नो, बट दिस इज नॉट द केस. आउट ऑफ 10 अवतार, हम्म 10 अवतार आपको पता है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलराम, कृष्ण, कल्कि. ये जो कल्कि 10 अवतार हैं, only the Kalki avatar is there who get birth on earth, or who get incarnated in every yug. Okay, मैंने क्या कहा आपको, कल्प में, एक कल्प में 1,000 साइकिल ऑफ युगस, महायुग या चतुर्युग, राइट राइट? सो वो जो 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, दशावतार, उसमें ओनली कल्कि अवतार विच येट टू कम will be incarnated for 1,000 times. Definitely there will be 1,000 कलयुग, right? कल्प में अगर मैं एक चतुर्युग बोल रहा हूं तो हर चतुर्युग में एक कलयुग होगा, राइट? हाँ राइट सो 1000 ओनली कल्कि अवतार incarnated every चतुर्युग. ओके Okay, now अच्छा here the catch, except Kalki avatar, remaining 9 avatar of Lord Vishnu incarnated only once in the entire Kalp. ओके Okay, that's why that is a difference. Now this Kalp, this cycle, ये जो है, अब like what I'm saying is, एक कल्प में there will be 1,000 Satyug, 1,000 Treta, 1,000 Dwapar, and 1,000 Kaliyug. So Kalki the 1,000 times he will incarnate it, right? ठीक है But बाकी जो 9 अवतार हैं, he will incarnated only once in a कल्प, कभी भी वो इस कल्प में. So out of 1,000 Satyug, it is possible that Matsya avatar may happen on 3rd Satyug, Kurma avatar may happen in 15th Satyug, Nirsingh avatar अच्छा may एनी happen in एनी any रैंडमली Satyug, रैंडमली randomly. ओके ओके And आई सी this, ये the क्वेश्चन मैं beauty करने of वाला था this, but yeah the clear. beauty of this, I'll just let me explain this so that will be easy. Similar way, all other avatar. ठीक है And the beauty of this Kali Yuga is that this is the 72nd Kali Yuga. 70 सेकंड ना ठीक Okay, before that, I tell you that again, what I'm telling is it's not my knowledge. It's everything is written. So I'm not है telling anything from my mind. It's everything is written. You can go buy a Vishnu Puran, you can read it. Now it is said that right now there is 51th year of Brahma is going on. Okay, am I audible? हाँ या So our current Brahmaji is just इन 51-year-old. ओके I'm talking about year. ईयर राइट ये तो हम एक आधे दिन दिन की बात कर रहे कल्प में you can understand the timeline of उसके एक दिन is equal to 4.3 billion.
Okay. Again, he will live 360 kalp for to complete 1 year of Brahma. It's immense. Okay. So this is a 51th year. Right. And इस कल्प का जिस समय हम लोग अभी बैठे हैं, we are talking, that is the 72nd कलयुग. Right. एंड इससे पहले जो द्वापर गया, इस कलयुग से पहले जो द्वापर था, कृष्ण, that was the 72nd द्वापर. Okay. And we are fortunate enough that the actual Krishna avatar and Balaram avatar happened in the previous द्वापर. अभी नेक्स्ट अभी नहीं होगा, नेक्स्ट 70, अभी तो 72nd चल रहा, अभी तो इट हैज टू रीच टिल 1000. सो मींस अभी आने वाले अगले 938 चतुर्युग में अभी कोई 928 चतुर्युग में कृष्ण अवतार नहीं होगा. ओके, गॉट इट. एंड मैं अपने लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि द टाइमलाइन इज इमेंस, ह्यूज. अभी लोग कहते हैं क्या, बिकॉज पीपल डोंट नो दिस, पीपल थिंक ओके अभी तो भाई पिछला द्वापर था तो कृष्ण जी हो गए होंगे, उससे पहले राम जी हो गए होंगे, तो अगर कृष्ण जी 5,000 साल पहले हुए हैं तो राम जी 10,000 साल पहले हुए होंगे. That is a general thought I'm saying. When I didn't know about this, I also used to think कि राम जी भी 10,000 साल पहले हो गए होंगे. No, it's not like that. जो करंट राम अवतार है, I don't know the timeline of all other avatars. Few avatar I know, so I'm telling you. So the current कल्प के जो श्री राम ने अवतार लिया, he got incarnated on, this is not sorry, I'm sorry, this is 28, not 72. I'm so sorry. It's the 28th कलयुग, not 72. So sorry. तो उन्होंने जो incarnation लिया था in 24th. 24th मतलब 24th जो त्रेता आया उसमें श्री राम ने अवतार लिया. उसके बाद 4 चतुर्युग पहले, तो उसके 25th गया खाली, 26th गया खाली, 27th गया खाली, और ये जो 28 जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं उसमें श्री कृष्ण ने अवतार लिया. अब आने वाले अगले पूरे मतलब जो 970 973 972 जो आने वाले चतुर्युग है, इट विल बी एम्प्टी, ओनली कल की अवतार विल हैपन. Okay, so because of that the question was completely valid, but because of that 99% people don't know that. They think that every chaturyug Ram will come, Krishna will come, and there are different theories, right? And if you say if you read some Puran also, especially Bhavishya Puran and all, now no one knows that because Bhavishya Puran is the badly fabricated Puran. Okay, I personally don't trust it because it was very hugely fabricated. So बहुत लोग कहते हैं कि there are different types of avatar also, Purna avatar, Ansha avatar and all and all. So I'm not going to in that detail. I'm just simply saying that the kalp और उसमें जो अवतार का जो sense है, that is a different. So अभी ये जो last द्वापर में हमने भगवान श्री कृष्ण को देखा, this is the 28th द्वापर. That was हमने नहीं देखा, मतलब we know we are living in that चतुर्युग, so we are lucky. That was the complete incarnation of Lord Krishna. भगवान कृष्ण का वो incarnation. अभी अब आने वाले समय में हम लोग चले जाएंगे, there will be some again human being, you know, they are not going to see that. हाँ, तो so tell me one thing कि 1200 जो इसमें हम जो मतलब सिंगल चरण है, 1200 डिवाइन ईयर्स हैं कलयुग में, तो इससे पिछला युग जो था वो डेफिनेटली 1200 into 360 ईयर्स से पहले था. बहुत. हाँ, no, 1200 into not 1200, 2400, it was द्वापर. नहीं, ये वाला करंट से पहले होगा ना. अभी कौन से ईयर में होंगे हम इसमें? अरे नहीं सर, अभी तो हम लोग कलयुग में है, राइट ना. कलयुग के 1200 कुछ नहीं हुआ अभी, बस 5 और 6,000 साल आप मान के चलो, अभी तो बहुत है. 1200 into 360 ह्यूमन ईयर्स जो
अभी खत्म नहीं होने वाला बहुत जल्दी ये। अच्छा, तो द्वापर जो था वो 2400 इंटू 360, हाँ, राइट? वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू। तो ये हो गया 8,64,000। 8,64,000, हम्म, 1200 इंटू 360। नहीं नहीं, 2400 इंटू 360। है ना, वो तो द्वापर वही वो द्वापर का हम देख रहे हैं। कलयुग का आप बताओ, ये 4,32,000 होगा। 4,32,000 होगा कलयुग हम्म, का, राइट? तो कलयुग का 4,32,000 में अभी सिर्फ 4-5-6 हजार ही गया है। ठीक है, दे आर लेकिन उससे येट टू पहले कम। जो था, उससे पहले 8,64,000 पे द्वापर द्वापर हाँ के हाँ, आठ उससे लाख पहले चार हजार ईयर्स जा चुके हैं, ह्यूमन ईयर्स, जा चुके हैं, हाँ। राइट? हम्म, तो 8 लाख, लेकिन जो ह्यूमंस, जो अर्थ में ह्यूमंस का जो मतलब वो है, एवोल्यूशन है प्रॉपर ह्यूमंस का, होमो सैपियंस का, वो 2 लाख साल से ज्यादा पुराना नहीं है। I, सो I हाउ कैन यू agreed. से कि I agreed. I इसमें agreed. But not only the I agreed. So again, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, coexistence. हम्म, First of all, this is the existence of a species. It's not the existence of a civilization. ये भी थोड़ा सा आपको यू देखना। मीन लाइफ, सिंपल Life. लाइफ, I'm talking about सिंपल the सिंपल जो बेसिक फॉर्म में लाइफ है, वो सिंगल life. सेल वगैरह। अच्छा, इस लाइफ में भी देयर आर, मैंने एक और टॉपिक आपको डिस्कस किया था लास्ट में, how the हम्म, this Darwin's evolution theory is completely based on Dashavata. We will discuss it later on. तो वो भी हाँ हाँ, वो तो एक अलग चीज होगी, हाँ। इवोल्यूशन का पूरा चल, यहाँ पे क्या चक्कर है सर कि not only this kalpa concept is a cycle. हम्म, Actually, the entire Hindu celestial timeline runs on a cyclic way. हाँ, पूरा साइक्लिकल है, ठीक है। Cyclic way. So even the चतुर्युग का जो सिस्टम है, that four you combined together makes a चतुर्युग, it is also a cyclic year. ओके। बहुत हम्म, जगह पे लोगों को लगता है कि भाई सिंस इट्स 5,000 years सिंस द्वापर, so they say that after, there are concept, again these concepts are not right. हम्म, I can't claim anything, but many people will say, I don't know if you've heard, and it's very famous concept, a kind of a pseudo concept, I would say, हम्म। that life repeats after every 5,000 years, ऐसा कहते हैं। किस बेसिस पे, मतलब ये किसका, ये this स्क्रिप्चर्स is का I है don't know, नहीं स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ अच्छा, वैसे ही लोग है, कहते हैं। it's not written in scriptures. So what ओ, I'm मैं saying समझ गया, is, दैट इज when we लाइक are दे, talking, व्हाट दे से इज कि सिविलाइजेशन जो है 5,000 ईयर्स में फ्लरिश करती है, प्रॉस्पर करती है, एंड देन इट तो ऐसा स्टार्ट्स फ्रॉम द maybe, वो वाला। but ये concept it's not written anywhere, and हम्म। I see, नहीं, ये इसी I की बात कर रहे हो ना आप, सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो कि सिविलाइजेशन प्रॉस्पर्स एट अ पीक नहीं ऑफ नहीं नहीं नहीं, 5,000 ईयर्स और मतलब फिर वो रिक्रिएट। they say like today what, today is 6th of January 2024, हम्म, हम्म, and Ajay and Nila both are हम्म, talking on that particular topic. हम्म। After 5,000 years, exactly on अच्छा, same सारे day, we will इवेंट्स be इवेंट्स talking on, we will be अच्छा, debating on Teams, my Asus अच्छा, laptop, your maybe Dell or HP or whatever. So this अच्छा, is really, सेम रिपीट होगा आफ्टर 5,000 ईयर्स। so they say, I mean, I don't think it will किसका happen. किसका क्लेम, किसका है ये? They are इज इट saying, रिलीजियस क्लेम या ये कुछ वैसा ही आजकल क्लेम ना है? गुरु लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे, सेल्फ अच्छा, एक्लेम्ड गुरुज हैं तो, हाँ, तो फिर और इसमें जब बैकिंग ही कोई नहीं है तो फिर इसका तो बैकिंग में। कोई बेसिस तो भी व्हाट नहीं आई एम बनता। सेइंग इज, अगर हम कल्प का टाइमलाइन देख रहे हैं, इट्स साइक्लिक राइट, हम्म, हम्म, तो यहाँ पे बेसिकली तीन टाइमलाइन आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक युग का टाइम है, एक चतुर्युग का टाइम है विच विल बी डेफिनेटली बिगर, एक मनवंतर का टाइमलाइन है, और एक फिर फाइनल कल्प का टाइमलाइन है। हम्म, ऑल आर साइक्लिक एंड ऑल आर कंप्लीट, राइट सर। अभी अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये होमोसेपियंस और दिस स्पीशीज दैट स्पीशीज, अगर हम लोग ये बात करेंगे ना, देन वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट अर्थ। फिर जो अच्छा, हम ये अच्छा, डे, अच्छा, डे, यू आर डेटीज टेलिंग का कि बात कर रहे हैं, अक्रॉस यूनिवर्स या अक्रॉस हाँ, मल्टीवर्सेस ये जो हम या देवास ऑल का बात कर रहे एग्जिस्टेंस, हैं, दैत्यास ऑल का बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस, हाँ, ये सब फिर हमको छोड़ना पड़ेगा, प्लैनेट्स का बात कर ऑल रहे हैं, ऑल सबको ऑफ छोड़ना, एग्जिस्टेंस में जो लाइफ जो है वो उस तरीके से रिपीट उस होती है, तरह तो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कृष्ण और बलराम जो, वो तो खैर इसी में थे, बट श्री राम जो थे फिर वो किसी और अर्थ पे या किसी और यूनिवर्स में हो सकते हैं कि पॉसिबल, हुए हों। हाँ, ये इसमें जरूरी नहीं है कि इसी अर्थ पे होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है,
क्योंकि उसमें हमारे पास में 14, क्योंकि बिग बैंग का हमें एस्टिमेट मिलता है 14 बिलियन ईयर्स बेस्ड ऑन लाइट कैलकुलेशन जो हबल टेलीस्कोप वगैरह वाली है, तो इट इज क्वाइट एक्यूरेट, ठीक है, साइंटिफिक एंड बिग मेथड बैंग पे। का कॉन्सेप्ट बाय द वे एंड इट्स रिटन, बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो ये वो जो जो ब्रह्मांड का जो वर्ड है ब्रह्म अंड, राइट, उसमें भी सेम लिखा हुआ है, सिर्फ दैट कुछ नहीं था, इट वाज नथिंग, ऑल डार्क, अच्छा, सडनली एक्सप्लोजन हैपन, ठीक है, एंड उससे सबसे पहले तो मैटर जल क्रिएट हुआ। उत्पन्न हुआ, मैटर नहीं, जल, अच्छा, वाटर। चल हुआ। हाँ, तो जल दैट्स भी व्हाई मैटर ही वाटर है। वाटर इज वेरी, हाँ मैटर ऑब्वियसली, water is very much important because for life water is the most essential thing। हम्म, किसी भी प्लेनेट में जिसमें वाटर नहीं है, अभी हम लोग इस तो अर्थ पे श्री कृष्ण क्या अवतार कहते हो गए। हैं, हाँ, सॉरी, एक क्वेश्चन आ रहा था हाँ, कि जो 14 बिलियन ईयर्स का हमारे पास में टाइम स्पैन मिल जाता है हमें इस आर्ग्यूमेंट के लिए कि ये अक्रॉस ऑल द एग्जिस्टेंस हो सकता है कहीं भी, हो सकता है, कहीं हो सकता है, राइट? यहाँ बहुत 14 14 अलग बिलियन कॉन्सेप्ट है ईयर्स है, सर, तो थ्री लोग क्या तो, ये 14 बिलियन ईयर्स भी कैलकुलेट होके नियर कोई वैल्यू आती है इसी सेम there, कैलकुलेशन में there, there are a फ्रॉम hell lot स्क्रिप्चर्स? of information given, especially if you read two Puran, I would say। क्योंकि अगर बिग ये बैंग सब, दिया हुआ है आपने कहा, तो बिग बैंग हाँ मैंने भी कहा time दो, है। एक तो ब्रह्म पुराण, सॉरी विष्णु पुराण में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और एक पुराण है ब्रह्मांड पुराण। अच्छा। देयर आर 18 18 महापुराण, राइट, देयर आर हम्म। 18 महापुराण, 18 उप पुराण। हाँ। उसके बाद बड़े सारे गुरु लोग आए, अपने अपना बहुत सारा आपको आलतू फालतू के हम्म। पुराण में मिले हैं, खुद ही तो कुछ भी ये लिख तो दिया था। जो जो शंकराचार्य ने लिखे थे 18, उसी को मानते हैं ना अभी तो। ना ना ना, शंकराचार्य ने, ऑल द 18 महापुराण आई एम सेइंग, अच्छा। ऑल द 18 महापुराण आर रिटन बाय महर्षि उन्होंने उन्होंने वेदव्यास। भाष्य भाष्य लिखा ना उन पे, पुराणों हाँ, पे। उस पर भाष्य लिखा उन्होंने, तो उन्हीं को शंकराचार्य मानते भी हैं ना ऐसे जिन ही है, जिन 18 पे लिखा है। शंकराचार्य भी, आई हैव रिटन आर्टिकल ऑन दैट, हम्म। that two concept, one is Shankaracharya, one is Adi Shankaracharya, both are हाँ, different। आदि शंकर की मैं बात हाँ, कर रहा हूँ, तो हाँ, जो नाइन्थ शंकराचार्य की जो सेंचुरी वाले बात हैं ना। करते हैं, जिसको नॉर्मली हम आदि शंकराचार्य कहते हैं, हम्म। he wasn't born 1500 years ago। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है, तो वो तो हमारा टॉपिक आना है अभी, वो तो हाँ, शंकराचार्य वो पे जब तो आप, डिबेट देयर इज अ टाइम पे कवर कॉन्सेप्ट ऑफ करेंगे। संवत्सर, राइट, संवत भी कहते हैं ना, अभी हम लोग विक्रम संवत ये सब, हाँ तो हाँ। संवत्सर में एक टॉपिक है वो, ऑलमोस्ट युधिष्ठिर संवत जब स्टार्ट हुआ था, ही वाज देयर दैट टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक सो है, वो लेंगे हम कहने का उसको, मतलब ये अलग है से कि टॉपिक। ये जो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, दैट दैट इज हम्म। देयर। आज हम इस अर्थ पे हैं, राइट, अभी राइट। जब ये चतुर्युग पूरा होगा, देयर विल बी अ जल प्रलय, तो प्रलय का हम्म। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, देयर आर मेनी मोर अर्थ गोइंग अराउंड, अच्छा। there are many stories given for which advocates clear advocacy of multiverse। I'm not going to cover in this topic, otherwise it will be very very long, but हाँ हाँ, there are, we can मल्टीवर्स की talk, थ्योरीज हैं, मल्टीवर्स की we have, थ्योरीज हैं, है ना, स्पेशली वो they ग्रेविटी से say it's रिलेटेड। a story, right। अभी देखो, even if we think about नहीं scientifically तो also, right, वेदों में जब ये स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, तो बिकॉज अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी भी देगा, जस्ट थ्योरी भी देगा, तो उसका वो कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ, एक्सप्लेनेशन देगा, नहीं, one more thing, राइट? even scientifically, for example, whatever scientific information we have since last 100 years, for example, forget about before 100 years, 100 years में ही हमारे पास जो यूनिवर्स को लेकर जो इंफॉर्मेशन है, we know how big universe is, right, या and it is simply impossible that we are the only one living in this particular planet and talking and we are having, हाँ, ठीक है, जो भी लाइफ की कॉम्पोजिशन के लिए हाँ, रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे हर काफी जगह मतलब कि यहाँ पे ये बिलीव हो सकते हैं, अभी बहुत बहुत कॉमन सी जस्ट है। लास्ट 50 60 100 ईयर के इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, and we are talking about which was ये written बेसिकली 5000 years ago। हाँ, तो ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है बेसिकली, हाँ, बट जो आप कह रहे हो दैट इज आल्सो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ना, वो तो एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुआ ना वो, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं, चाहे वो 5000 साल पहले लिखे हैं या अभी लिखे हैं, तो दैट इज साइंटिफिक, दैट इज साइंस ना, जो हमारा that's क्लेम है that's कि दैट इज that's साइंटिफिक science, कैलकुलेशन। yeah, तो उस you know, साइंस का बेसिस क्या है, हाउ कौन से मेथड्स यूज हुए थे, क्या हुआ था, we never know, वो sir। डॉक्यूमेंटेड नहीं है, I तो क्यों tell you, नहीं है? you're एंड from आर यू which ट्राइंग place, टू, Ajay? मैं यहाँ से मतलब नोएडा में अभी हूँ, वैसे उत्तराखंड से बैकग्राउंड हूँ Delhi, मेरा। right, so I हाँ, tell दिल्ली। you, in this country हम्म, you'll find many many temples,
हाँ which is built in such a way you will be amazed that how is it possible today हाँ, also तो with वो engineering. आर्किटेक्चर हो गया, वो So we आर्किटेक्चर never हो know, गया। we don't know sir. तो अभी now मंदिर वो तो खैर फिफ्थ। six हाँ हाँ। 6,000 7,000 years ago ये कैलकुलेशन उस समय के सेक्स ने कैसे किया और किस नॉलेज के बेस पे किया हम्म, भाई उनको हम ऐसे ही महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि ऐसे थोड़ी देयर आर डिफरेंट लेवल्स आल्सो नाउ महर्षि वेद हाँ व्यास इज वन ऑफ द लेवल्स मोस्ट हैं, प्रोमिनेंट बट यहाँ एक सेंस क्लैरिफिकेशन चाहिए। सो यू आर अग्रीइंग कि ये साइंटिफिक ही एक्सप्लोरेशंस हैं और साइंटिफिक स्टडीज हैं और इसके लिए कई मेथड्स यूज हुए हैं, एंड वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है बेसिकली, राइट? एग्जैक्टली अरे सर रामायण में यू नो अबाउट पुष्पक विमान राइट हाँ हाँ, तो तो 100 साल पहले तक डॉक्यूमेंटेड किसी को नहीं है पता भी तो नहीं था ना कि हम लोग इट्स डॉक्यूमेंट में इट्स रिटन देयर ना आई एम टॉकिंग अबाउट द श्लोकास एंड स्टोरीज वी हैव रामायण के तो पूरे 24 अच्छा श्लोक ठीक है है। वी हैव तो विमान वहां पे शास्त्र की आप पुष्पक बात कर विमान रहे हो है राइट जिसमें, विमान हाँ विमान देयर शास्त्र इज अ है। कंफ्यूजन आल्सो बिकॉज विमान हैज अ डिफरेंट मीनिंग आल्सो वन विमान इज अच्छा। जो उड़ रहा है सो इफ यू आर टॉकिंग हम्म। अबाउट पुष्पक विमान वो उड़ने वाला विमान का हाँ। एक अर्थ होता है रामायण में बिल्डिंग आल्सो अच्छा। विमान का एक अर्थ होता है बेड आल्सो so again ठीक। that viman word where it is for on what context it is using that is very important to understand so what I'm ठीक है, saying तो is अभी रामायण में तो क्या है ना, पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट है राइट अभी आई गॉट इट कि उसमें 100 साल है, पहले मतलब तक कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं 100 यूज्ड साल उससे, पहले तो राइट? कोई नो वन अभी वुड इसको बिलीव कि इसको हम लोग उड़ थोड़ा सकते हैं राइट थोड़ा टाइम हो रहा है तो मैं एंड करना, तो हाँ या एंड में मेरे एग्जैक्ट को एग्जैक्ट एक आपसे क्लैरिफिकेशन ये लेना है कि आपने मतलब सिंस यू अग्री कि ये साइंटिफिक स्टडीज ही हैं और आई साइंटिफिक एम नॉट एग्रीड एक्सप्लेनेशंस आई भी हैव अवेलेबल हैं। प्रूवन हाँ तो वही मतलब वही प्रूफ तो खैर वो है ही, मतलब प्रूफ वो होगा, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स में, आप ये या कह रहे हो ना? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली तो दैट इज लाइक, तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट ओपिनियंस है कि उन्होंने ऋषियों ने ध्यान करके उनको कहीं से पता नहीं कुछ डिवाइन नॉलेज आ गई या कुछ आ गई उस तरीके से किया, या फिर उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन प्रॉपर जिस तरह से आज होती है, प्रिमिटिव मेथड जो भी उस सर टाइम के रहेंगे वही ऋषि करके, वही टेक्निक्स यूज करके करी, कुछ एक देयर मेथड इज अ मेथोडोरिकल प्रोसेस से उन्होंने किया explanation of rishi है। well I, mean, I don't know the generally people say rishi is someone who do research I mean that is again हाँ, a तो concept वो is so साइंटिफिक right रिसर्च वही मेथड है ना, वो हाँ पुराना मेथड हो सकता obviously है, थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है कि मतलब कुछ इसमें जैसे मार्जिन आ सकता है, मार्जिन हाँ ऑफ आ एरर, सकता है बट वो है बहुत मेथडोलॉजिकल और साइंटिफिकल प्रोसेस है, राइट? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है कि ध्यान करा और किसी को कोई सपना आ गया और उसको उसने लिख दिया ग्रंथ, ऐसा नहीं हुआ है, राइट? हो सकता है अगर ध्यान किया तो नहीं वो तो फिर ध्यान से तो नहीं होगा लेकिन हर नहीं चीज होगा, स्टार्ट तो यहीं से नहीं होती है होगा। ना माइंड से ही होती है ना हाँ तो वो तो दिमाग आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बट मेडिटेशन इज हाँ समथिंग डिफरेंट ना, वो दैट ऐसा इज नहीं है कि आप ऋषियों ने जो बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि भाई ध्यान किया और ध्यान करके उन्होंने सूर्य की दूरी नाप ली, वो नाप ली, ऐसा तो नहीं है, उन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज करी एंड दे रिसर्च टेक्निक्स वेल। डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली किया हो अभी ठीक है, क्या गुड। किया है अभी नाउ हाँ अभी वो यहाँ पे हमें नहीं बैठ के पता है, बट वी देखा आर श्योर कि ये तो साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि ये साइंटिफिक इसके रिजल्ट्स हैं, तो इसका इसकी स्टडी भी तो साइंटिफिक है, होनी एग्जैक्टली चाहिए बैकग्राउंड में। ठीक है, तो वेरी गुड, आज का मेरे ख्याल से इतना काफी होना चाहिए। ठीक है, या श्योर कैमरे को पता नहीं क्या हो गया है, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम टेकअप करेंगे अभी और, है ना, कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। श्योर श्योर श्योर